this block, that why we use blocks when we sit. Because if you would see that if you don't have a block, or if you have anything to just roll up and make it like as much thick as it is right now, this block like 4 inches, and you would put inside, put under you, then you will just realize that there is less pressure on your back. Your rib cage is more free. आप आराम से श्वास ले सकते हैं. आपको बिल्कुल भी compression नहीं होगा. You won't feel that much pressure on your lungs also. You would be able to breathe enough so that real output may come out. Because the amount of oxygen will be like enough, which will be required throughout the abhyasa in your body. If you would not just keep this, then your lower back will just go a little back, and your rib cage will start shrinking inside, compressing inside, which would put a pressure on your lungs also, which won't allow the proper exhalation and inhalation also. So that is kind of a stress position when you're sitting like that. So you should like freely sit like that without any effort. If you're sitting like that without any effort, you can sit longer, and you can also enhance a time period of your meditation also. If you want to go into that subjectless or nothingness state, then you need to have ease. You need to have like sukh and sthirta, like stability and balance, stability and ease in a specific position. Then only you will be able to meditate and just eradicate all your thoughts out from your mind when you meditate. So simply, it's prayer is kind of a meditation only, just to execute prayer nicely. And that's the reason that we are sitting in this position, so that we may find ease while doing prayer, and our mind may not distract. So आराम से चिन्मय मुद्रा में बैठ जाएं, इस तरह से ब्लॉक को यूज करते हुए आराम से just try to lift up your chest a little bit. When I say lift up your chest, it doesn't mean that you just like start lifting up with the ego. It's just simple thing. Your floating ribs. Am I audible to everyone? Yes. Okay. Yes, Guruji. Ji. So what you have to do is that you have to always focus on this thing. This is the most important part. The intercostal muscles are putting a compression on your floating ribs. That's why your lungs are not expanding nicely. This is the main issue, and this is the only significance that you can diagnose somebody is stressed, or the psychologist, psychiatrist do actually. They just watch you and they see your posture. If your rib cage is gone inside, your rib cage should be like massive. It should be like big, huge. Your rib cage should never should go in like that. Because if your rib cage will go in, your sternum will go inside, and your sternum will not be pulled out. The more immersed sternum you have, the lack of immunity will be faced by a specific human body. Because here we have the thymus gland, and the training center of the immunity cells. I could say, let me name it medically. They are called thymocytes, the T cells. If your T cells are not getting proper space, like the thymus gland is small, then the number of T cells will be less, and their training will not be up to that extent, so they can fight to any alien body, any foreign particle which is coming from outside, even the corona is lying in that category. It is also, it doesn't belong to us. It is like coming from outside. So if we would have that gland properly functioning and up to an enhanced level, so our thymocytes would be like so strengthened that they could fight any disease which is coming from outside, any bacteria or virus. So just remember that this rib cage is most important thing. Everything's like the most important parts of your body which is keeping you healthy, which is your metabolic activities, your immunity system is your respiratory system is lying under this. So you have to take care of this very nicely, and you have to just make this intercostal muscles which are above your obliques, which are just here around your rib cage. We have like 3 types of these muscles, intercostal muscles. There are innermost, outermost, and intercostals. So you have to take care of them, that is they are flexible enough. So your chest should expand when you breathe, and when you exhale, when you inhale, it should expand. When you exhale, it should go in properly. There should be no weight, no pressure of your rib cage on your lungs. Your lungs should be like properly free. So just keep your thoracic in, the middle region of your back in, and just lift your rib cage up, little bit up, so you can feel that you can expand when you inhale. Now simply sit with a very ease position. आराम से बैठना है, अपने हाथों को आराम से इस पर रखना है, and just try to just let your fingers go towards the earth. Let them face towards the earth, like you are exchanging energies with the earth. आराम से तीनों उंगलियों का जो मुख है वो नीचे की तरफ होना चाहिए.
इन दोनों उंगलियों को आराम से रखें, सीधे देखें. Now roll your shoulders back. Your shoulders should be back, so there would be no pressure. आपका बिल्कुल भी pressure नहीं होना चाहिए shoulders का भी. They should be in proper alignment. आपका collar bone के side में आपका deltoids होना चाहिए. आराम से सीधा देखें. एक लंबी गहरी सांस भरें. Inhale and exhale. Let me remind you, when you practice this, when you inhale or when you exhale, you have to just practice something with your mind also. When you inhale, you have to inhale a good idea inside you, a good thought inside you, a good act about yourself or anything. Like you have to manifest a good thing. And when you exhale, you have to just manifest. When you don't have to manifest, you have to take out a bad thought or a bad idea or a bad memory out of your mind. Just try this. When you inhale and exhale, when you sit in prayers or meditation, just practice this. With every inhalation, a good idea must go inside, and with the exhalation, a bad idea or a bad memory or a bad thought, anything which is bothering you should go out with exhalation. So like this, like you will just like become empty from inside. You will not have anything like which would bother you. This is such a practice. आराम से जो बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस बाहर निकलती है उसके साथ हमारे विचार भी खाली होने लगते हैं. We just have to analyze. It's a very deep subject to discuss how it works, but you have to just practice this. आराम से इस तरह से बैठिए. लंबी गहरी सांस के साथ उच्चारण शुरू करते हैं. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि. आबाहु पुरुषकारम् शङ्खचक्रस्य धारणम् सहर्षीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. हरिः ॐ. सभी को मेरा फिर से नमस्कार. Now I request everyone that to please get up on your mats and get ready for the Sambodhi Hatha Yoga, a sacred geometry of yoga, or a practice of alignment to enlightenment, just by simply aligning your body, and you will find that your mind is getting aligned with your body. And though that's how you reach the enlightenment, nobody can take you there. It's just you. You have to make efforts to align yourself, and you will have it. You will have it. Nobody can sell you. Nobody can put you. Nobody can pressure you for this. It's like this is not an era of such gurus who can just touch your head and can make you enlightened. That period is already gone, and it's like you have to do efforts from your end, and then only you will be able to achieve it. So it's like it's time to just take actions and just do efforts from your end, and not to expect anybody would come and do some magic in your life. तो आराम से खड़े हो जाएं और आज के संबोधि हाथ योगा अभ्यास के लिए पहला आसन है. पहले समझ लें before any asana what is must to correct your enlightenment and to improve your cardiac health. It's like you have to start understanding that why you have this problem with your cardiac health, or why you have problem with your all over physique or all over fitness, all over body, or why this inflammation, or why this toxicity level, or why this problems of alignment with your body. First of all, I would like to introduce my student Vishwa. He's been working with me from last 4 years, and he's been practicing Hatha Yoga from last 10 to 11 years now. And he's a regular sadhaka, practicing all the yama and niyamas as possible in this world. In this today's world, he's trying to maintain all of them. So it's like the kind of perfection he might have while executing all those asanas, which I'm going to tell you, you may not have that.
but it doesn't mean that you are not doing it right. We will tell you that up to what extent you have to go, but because these asanas are very basic. It's the sequence. The asana doesn't matter that much. It's the sequence that after which asana is placed. So that is why I request you to just remember the sequence, or we can just drop you the sequence after the session also. Just focus on the details, how we are explaining it. So, आप सबसे पहले याद रहे that if we have lost something, it is the samasthiti. We need to attain samasthiti. It takes exactly 2 days to explain and correct samasthiti of the students who just initiate to yoga, who just start yoga in their life. It's like if they are concerned about to do it like in a righteous way, in a right way, in a proper way, so they may attain all this physical and mental, abilities. So, सबसे पहले it is required that your body is properly aligned and you can stand properly. You don't have a problem of supination or pronation. Supination pronation is it's kind of alignment disorder, and it can give birth to more than 800 diseases in your body. So it's like this 800 diseases include so many cardiac problems and so many like BP, all this mostly like chronic problems which are known by normal people are just because of pronation and supination only. It's because how you have to diagnose it when you stand properly. Then you have to analyze that whether the weight of your body is equally falling on your toes and on your heels. And you have to also imagine you have like 4 wheels in one leg. आपको ऐसे सोचना है कि आपके आगे पंजे की तरफ you have 2 wheels, one this side, another this side, and you have 2 wheels जो कि heels के बाहर की तरफ और इस तरफ है. This is also you can diagnose from your shoes, from your slippers you wear. आपने देखा होगा कि आपके slippers एक कोने से घिसना शुरू हो जाते हैं. And that is the issue that your body weight is falling not equally on your feet. It's like it's not distributed equally on your feet. It's like more ज़्यादा किसी एक कोने पे होने की वजह से आपका shoes एक कोने से घिसना शुरू हो जाता है और आपको ज़्यादातर problem होने लग जाती है in your pelvic region, in your spine, because the center of gravity line is lost now. आप सभी engineer student हैं and you are studying engineering, so you might be studying physics also, mathematics also. You might know the proper role of center of gravity line, how it should pass through a human body. अगर उसका location change होता है, it will start giving you many chronic disorders. Time by time, the chronic disorders will rise, and you will have an output of them after a certain period of time, like certain years. It won't come like अगर आपका एक दिन में खराब हुआ है समस्थिति, so it would just come next day. It may take 10 years, it may take 12 years, it may take 20 years, it may take 5 years, or it may take just 1 year if the center of line is gravity का line जो है, it's totally disturbed. So you have to take care of that to not to just have that too much pressure of gravity on your body or on the softened part or on the like sensitive part, that the gravity line should not pass through that point. Then you should know how to correct your समस्थिति. आपको समस्थिति को ठीक करने के लिए आंखें बंद करना है, just stand still. एक बार सीधे खड़े हो जाएं आराम से and stand still and watch your feet through your brain. अपनी चेतना के साथ, अपनी consciousness के साथ अपने body weight को देखना है that your body weight is more on which part. Like आपके toes पर ज़्यादा है या फिर आपके heels पर ज़्यादा है. अगर आपका body का weight आपके toes पर ज़्यादा है तो it can be supinated. और अगर आपके heels पर ज़्यादा है तो आपके पैर बाहर की तरफ घूमे होंगे, आपके toes इस तरह से घूमे होंगे, and it's called pronation. आपको इसे correct करने के लिए you have to just bring your feet inside. Mostly people are suffering from pronation only. जो chairs पर बैठते हैं, car ज़्यादा drive करते हैं, बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो जो problem होता है, you might have seen that when you stand in general life, normally when you're standing like that, so after a period of time, like for 5 minutes, 6 minutes, or 7 or 10 or a half an hour, you will start just taking support like this. You will start bending after like that. You will shift to another leg, and when you will be tired from both the legs, then you want to sit. It's just like I just want to question like that from a normal person: is a human being who is into his young age, is we are so weak that we cannot stand for 2 hours, 3 hours without having pain in our body or without getting tired? We are not playing, we are not running, we are not jumping, we are just simply standing. What is it? It's just like our body is getting exhausted because of the pressure of the gravity of the line. It's not passing from the right point. You have to take care of it. If it is going through the like neutral point of your body, then you will not have any exhaustion, you will not feel tired because you're simply standing. It is taking just
very nominal energy from your body. So आपको हमेशा याद रखना है आपके जो toes हैं, your toes should bring your toes little bit in. तो जैसे ही आप अपने toes को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, analyze this from your mind that आपके toes और आपकी heels पर weight equal आना शुरू हो जाएगा. And what you will see that this proper adductor group of your body, यहाँ पर एक पूरा hamstrings और quadriceps नहीं होते हैं, scaphoid और बाकी तीन चार और मसल होते हैं which is called collectively adductor group. तो आप पूरा adductor group को activated feel करेंगे, your quads, your thighs, your scaphoid, all the muscles will be active, even your calves will be active. और आपको देखना है is your knees are facing forward, straight, उनका सीधा face होना चाहिए. आपके knees ऐसे पड़ोसी के घर में नहीं झांक रहे हो, they should be like totally straight. आप सीधे हो तो आप देख सकते हैं आपका toes थोड़ा अंदर होगा and आपका जो ये पटेला है, जो knee cap है, ये सीधा हो जाएगा. जब ये सीधा हो जाएगा then you have to just focus on them. Why I'm saying that? आप देखिए your ankles are properly connected to your tibia. So when your toes will turn outside, your tibia will turn outside and your tibia directly connected to the knee. ये कहीं knee से बाहर तो नहीं है, so knee will also rotate. When the knee is rotating, it is connected to the femur bone. जब femur knee घूमेगा तो femur भी उसके साथ थोड़ा घूमेगा, लेकिन ये कम कम होता जाता है. It's like जितना आपका toe घूमा है उतना आपका knees नहीं घूमेगा और जितना knees घूमा है उतना आपका pelvis नहीं घूमेगा. But there will be a shift. There will be a shift which will occur like slowly in your body and which will start causing you back pain. It can also cause you lordosis also. तो आपको याद रखना है किसी भी back pain से बचना है, you have to just take care of this thing. अब यहाँ से आप देखिए, when this pelvis will just shift outside, तो आपके abdominal muscles stretch होकर loose होकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं. So mostly people do have this extra belly, and they cannot just burn it. No matter how much they try, they cannot just burn it. It's just like you have to correct your pelvis for correcting that. You may start losing weight extremely if you just correct your samasthiti, because body का जैसे alignment होता है, तो वो अपने बहुत सारे corrections करना शुरू कर. Doesn't matter if you're concerned or you're thinking or you're working after it or not. The body have this self-understanding to correct itself if something have gone wrong. You have to just correct the alignment of the body. You have to allow it to function in proper way as it is designed. आराम से ऐसे खड़े रहेंगे. अब यहाँ से समस्थिति करेक्ट करने के बाद में it's like deep and long subject. Just talking about the समस्थिति, I would like to just proceed to the asana and the sequence. इसके बाद the first asana है ऊर्ध्व करतला ताड़ासना, which is for the extension of your spine. आपकी spine के extension के लिए which is really good. आप यहाँ से सांस पढ़ते हुए, remember one thing, we are starting the abhyasa now and it may take like 1 hour from now. आपको 1 घंटे के लिए एक चीज पर हमेशा याद रखना है that I'm guiding you properly with commands, giving you like exactly when you have to breathe in and when you have to breathe out. If you do that with the coordination of the movements, then it's going to be a great session. You're going to feel the bliss, you're going to feel the energy levels in your body. It will be like double, and you will feel like that you don't even need you don't need any food also or any energy drink also after that. You will be like super relaxed. आपका दिमाग, आपका brain बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपकी body stiffness को खाली कर देगी, and आपकी body में जो general pain होंगे, it would just chronic pain जो होते हैं, it will just go out after one session only. आप आराम से देखिए, यहाँ से आराम से अपने दोनों हाथों का, and you don't have to do it fast, just go as slow as I'm guiding. आपको just balance and stability and patience रखना है. यहाँ से अपने हथेलियों को अपने साइड में रखेंगे. सांस भरते हुए while inhaling, you have to just lift your hands up to the level of your shoulders. Okay, now do it again. एक बार वापस ले जाइए. यहाँ से सांस भरते हुए with proper inhalation. With proper inhalation, you have to just lift your chest. अपनी पूरा chest को ऐसे भरना है. When your hands are going, it means they are taking pressure off from your rib cage. When hands are going up, shoulders are going up, intercostals are getting stretched. So inhale. When you inhale properly, now rotate your palms upwards. अपने ऊपर की तरफ हथेलियाँ घुमाइए. सांस खाली करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं. खाली करते हुए lock your face. फिर से सांस भरें. सांस भरने के बाद अपना ऊपर की तरफ घुमाइए. Rotate your palms upside and exhale. दोबारा से exhale कीजिए. Now pull your kneecaps up. अपने घुटनों की जो कटोरियां हैं, ये जो पटेला है, your anterior knee, lift this cap up. इसको ऊपर खींचिए. Activate your quads और यहाँ से tuck your hips inside. अपने मलद्वार को संकुचित रखिए. दोनों पैर के टखने ऊपर खींचे होंगे. पंजों से ग्राउंड को पूरा अच्छे से ग्रैब कीजिए. Now keep breathing normally.
अपने पेट को बिल्कुल हल्का रखिए, रिब केज को एक्सपैंडेड एंड ट्राई टू जस्ट लिफ्ट योर शोल्डर्स एज मच अप एज यू कैन। नीचे का बेस इज टोटली स्ट्रेंथन, पंजों से जमीन को पकड़ा है, घुटने ऊपर हैं, घुटनों के टखने ऊपर हैं, मलद्वार संकुचित है, your hips are tucked inside और your shoulders are lifted up. Breathe normally, breathe करते रहें, अपने spine के extension को अनुभव करें. Just try to just dive inside your body and just experience the extension of your spine. The best thing you can do to your physical body is only to just correct the length or correct the gap or just maintain the gap which is between the vertebrae of your spine. So just give as good extension as you can see. Like you see a dog doing downward facing dog, he's trying to, a dog is trying to just extend the spine as much as possible to feel relaxed. आप और ज़्यादा खींचेंगे, and this simple asana is beneficial in very severe chronic disorders like Parkinson's, like motor neuron disorders. Maybe this is good. आप ऊपर खींचते हैं, extension of your spine is must. This is the first thing that you should do always when you initiate to abhyasa. It will generate enough heat inside your body. आपको याद रखना है, you don't have to just lift this up and just loose down. You have to just continuously apply this force to lift this up. इसको जितना ऊपर जितना लंबे समय तक खींचेंगे, 1 मिनट के लिए इसे खींच के रखना, it becomes very hard. आप देखेंगे, it looks very simple but it becomes very hard. आप ease के साथ में breathe करते रहें और लेते हैं. अब यहाँ से सांस भरते हुए open your fingers, सांस भरते हुए palms upward facing, सांस भरते हुए bring them to the level of your shoulders और सांस खाली करते हुए हथेलियां नीचे and exhale down. सांस खाली करते हुए हथेलियां नीचे, exhale down and then analyze your body. एक बार अपनी बॉडी को एनालाइज करें अच्छे से, एक बार अच्छे से एनालाइज करेंगे. Now it's second asana is पूर्ण पार्श्व कोण आसना. First one was ऊर्ध्व करतल third asana. Next is पूर्ण पार्श्व कोण आसना. अब इसके बाद में maintain a gap of 3.5 to 4 feet between your legs. अपने दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट का गैप मेंटेन करें. अब यहाँ से याद रखना है, you have to maintain this alignmental thing. आप छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो you will have a better experience also. यहाँ से we will go towards the left side first. तो यहाँ से अपना लेफ्ट पैर का आपने 3.5 से 4 फीट का गैप मेंटेन करना है. Don't go more than that. अगर आप 5 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं तो 3.5 is enough or 3 is enough. If you are above 6 or 6 then keep it 3.5 or 4 feet. अब यहाँ से अपने लेफ्ट पैर के टो पर आ जाइए, अपनी हील को उठाइए और हील को अंदर की तरफ रोटेट कीजिए एंड रेस्ट इट. नाउ यू हैव टू वॉच दैट योर लेफ्ट हील, योर लेफ्ट फीट इज स्ट्रेट इन लाइन ऑफ द राइट टो. उस पंजे की लाइन में आपका एडी होना चाहिए. अब यहाँ से आराम से सांस भरते हुए अगेन, सांस भरते हुए लिफ्ट योर हैंड्स अप टू द लेवल ऑफ योर शोल्डर्स. पूरा सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए बेंड योर नी, बेंड योर लेफ्ट नी. सांस खाली करते हुए बेंड योर लेफ्ट नी और पूरा पीछे की तरफ उसे एक्सटेंड करना है. नाउ एक्सहेल करते हुए इस हाथ को नीचे रेस्ट करेंगे. ऊपर वाले हाथ की हथेली को नीचे की तरफ फेस करते हुए इसे आराम से आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज पूर्ण पार्श्व कोण आसना. You have to just stretch this leg in this direction as much as you can. You can also use a wall if you cannot do it on the ground. As I told you that Vishwaji is like a pro. और आप आराम से यहाँ से इस पैर पर ज्यादा वेट डाल सकते हैं, हाथ पर ज्यादा वेट नहीं डालना है. They're asking if you can reduce the pace of your speech. If I would reduce the pace of my speech, I won't be able to explain the whole sequence. It would take so much of time. I'm sorry. You can just listen it afterwards if when the session will end. आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से इस हाथ को आपको आगे की तरफ खींचना है बहुत ज्यादा. It's like it is hectic for me also to speak like that because in general I don't speak. It's for your good and it's like I'm trying to deliver as much as possible for me in this 1 hour. तो आप आराम से यहाँ से इस हाथ को आगे खींचिए. जितना आगे की तरफ खींचेंगे और इसे जितना पीछे की तरफ खींचेंगे, you will realize this is like the magical asana, पूर्ण पार्श्व कोण आसना, because it allows to just take most of the breath in one side of the body. आपका एक लंग में ज्यादा ब्रेथ होता है, दूसरा लंग जो है वो ब्लॉक हो जाता है. Mostly like it's not like fully blocked but partially blocked. बाकी का जो इससे क्या फायदा होगा, आपका जो alveoli हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे because the full amount of oxygen in one inhalation is going in one lung mostly. तो 60 to 70% ऑक्सीजन इसमें आने लगता है and it start expanding. आपके alveoli
नंबर ऑफ एल्वेलाई ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, which is best for your heart, which is best for your central nervous system, your brain and your spine. यहाँ से इसे पूरा एक्सटेंड करते रहेंगे, थोड़ा सा दृष्टि ऊपर की तरफ रखेंगे. You have to just focus little bit. अगर आपको सर्वाइकल है, you don't have to just look like that. Just simply keep your neck straight. Else you have to just look like that. आप आराम से अपने जो आपका बाइसेप्स है उसे आराम से खींचकर अपने कान से लगाएंगे. You have to bring this leg and this middle body and this hand in one line. अब यहाँ से फिर से यहाँ पर आपको आराम से ब्रीथ करना है. You have to just breathe like normally, और जितना लंबा गहरा लेंगे that will be super beneficial. आराम से सांस भरते हुए हाथ को वापस ले आए, घुटना वापस सीधा करते हुए सांस भरते हुए आराम से सांस खाली करते हुए नीचे रिलैक्स. Now bring your feet back and then this side दूसरी साइड से करेंगे. अब यहाँ से दोबारा से जैसे मैंने बताया आपको, lift your heel up, rotate your heel from inside and just rest it. Now this toe and that heel is in one line. It is because we have a stiff pelvis. अगर हम इसे वहीं के वहीं रोटेट करेंगे then you won't be able to have that squeeze and that lock in this lung. तो वो लगाने के लिए you have to take this alignment. It's about the physiology. If you understand and if you study it enough and if you analyze when you practice, you will come to know that how the asanas are working. अब यहाँ से आराम से फिर से सांस भरेंगे. सांस भरते हुए बेटा can you bring me some water? My throat is getting thirsty. अब यहाँ से आप देखेंगे सांस भरते हुए लिफ्ट किया है. आराम से एक बार फिर से रिलैक्स करेंगे. दोबारा से सांस भरते हुए लिफ्ट करें और एक्सहेल करते हुए नी को बेंड करें. एक्सहेल करें, एक्सहेल करते हुए नी को बेंड करें और अपने हाथ को नीचे लेकर जाएं. You have to just control, you have to just regulate this speed of inhalation and exhalation. पूरा एक्सहेल करते हुए हाथ को पूरा एक्सटेंशन में ले जाएंगे. आराम से पूरा एक लाइन में रखना है. पीछे का पैर पूरी पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है. ये हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करना है. अपने नीचे वाले हाथ पर ज्यादा वजन नहीं डालना है. जस्ट रेस्ट इट ऑन द ग्राउंड और बैलेंस करके रखिए. ट्राई टू जस्ट लुक लिटिल लाइक दैट. और थोड़ा छत की तरफ देखना है आराम से एक्सटेंशन के साथ. नाउ जितना ज्यादा लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है. आराम से जस्ट स्टे हियर फॉर अ व्हाइल. 10 सेकंड से 20 सेकंड तक एटलीस्ट रुकिए वहां पर. पूर्ण पार्श्वकोणासना. सांस भरते हुए वापस आ जाएं. सांस भरते हुए हाथों को वापस ले आएं. अपना घुटने को सीधा करें. नाउ एक्सहेल. आराम से सांस खाली करते हुए एक्सहेल करें. अब यहाँ से अगला आसन है चेतक आसन. चेतक आसन is like super cool. It's like super nice for your brain. आपके groin से directly connected होता है and it is good for your cardiac health also because you are stretching the walls. आप पूरा जो हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं, ये जो आपकी वॉल्स हैं, उन्हें आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करके पूरा खींचते हैं and you allow your respiratory system to breathe in and breathe out so much up to such a great extent. When you will do it, you will realize. आराम से अपने पैरों को दोनों को रोटेट करें. जस्ट लाइक रोटेट देन एक बार इधर घुमा लें दोनों को. चेतकासन. यस. इस तरफ फेस करके खड़े हो जाएं. साइड बाय साइड. आराम से अपना लेफ्ट पैर आगे निकालें. लेफ्ट पैर 2 फीट आगे निकालें और राइट पैर अब 2 फीट पीछे ले जाएं. हाँ, 4 फीट का गैप आपने मेंटेन किया है आराम से. अब यहाँ से सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधों के लेवल में लेकर आए. सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधों के लेवल में. सांस खाली करते हुए अपनी हथेलियां पीछे की तरफ घुमाएं और उन्हें पीछे की तरफ ले जाना शुरू करें. अपनी हथेलियों को इंटरलॉक करें. इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर हैंड्स बैक साइड. अब सांस भरें पूरा और सांस खाली करते हुए बेंड दिस नी. इस नी को बेंड करें और पीछे वाले नी को रेस्ट कर दें. पीछे वाले नी को रेस्ट कर दें. अपनी एडी को ऊपर उठा लेना है और बिल्कुल पंजे को रेस्ट कर देना है. ऊपर की तरफ से बिल्कुल रेस्ट कर देंगे. नाउ लेट योर ग्रोइंग गो एज डाउन एज इट कैन. जितना नीचे जाने देंगे उतना अच्छा होगा. अब यहाँ से सांस भरें और पीछे की तरफ अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचिए. जितना खींच सकते हैं. सांस भरें. अब आप जितना इसे कर सकते हैं उतना ही इनफ है. Don't try to just think you're gonna achieve the level or achieve like the perfect alignment in one day. धीरे-धीरे अभ्यास से आप देखेंगे इस सीक्वेंस के अभ्यास से धीरे-धीरे आपकी बॉडी बहुत फास्ट वे से फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगी और बहुत ज्यादा आपके एनर्जी लेवल्स होंगे. आराम से मेंटेन करें. दृष्टि थोड़ा ऊपर की तरफ होगी, बिल्कुल ऊपर नहीं.
जैसे सामने और ऊपर के बिल्कुल मीडियम में। अब यहाँ से वापस आराम से हाथों को खोल दें, सांस भरते हुए हाथों को खोल दें, सांस भरते हुए हाथों को खोलें और अपने घुटने को वापस ले जाना शुरू करें, हाथों को नीचे रेस्ट करें, घुटने को वापस उठाना शुरू करें, सांस खाली करते हुए ऊपर जाएं, सांस खाली करते हुए ऊपर जाएं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और रिलैक्स, नीचे हाथ नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। अब स्विच योर लेग्स, अपने पैरों को या तो दूसरी डायरेक्शन में घूम जाएं या फिर अपने पैरों को इसी डायरेक्शन में घुमा लें, इसी डायरेक्शन। अब जैसे उन्होंने दूसरी साइड फेस किया वैसे भी कर सकते हैं। यू कैन स्विच योर लेग्स। अब यहाँ से दोबारा से सांस भरें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के लेवल में लेकर आए, हथेलियां पीछे घुमाएं, खाली करते हुए सांस को, अपने हाथों को इंटरलॉक करें, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें। नाउ इनहेल अगेन, थोड़ा सा फिर से सांस भरें, सांस खाली करते हुए दोबारा से अपने नी को बेंड करेंगे और नीचे वाले नी को रेस्ट करेंगे, अपने टो को बिल्कुल पीछे की तरफ रेस्ट कर देंगे आराम से। जितना ग्रोइन को नीचे छोड़ सकते हैं, ब्रीथ नॉर्मली, आराम से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, हाथों को पीछे स्ट्रेच करना है, पूरा ग्रोइन को पूरा लूज छोड़ना है। ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, दृष्टि थोड़ा सा 60 डिग्री 70 डिग्री का रहेगा। आराम से जितना ओपन कर सकते हैं अपने थोरेसिक को, जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर ले जाएं। चेस्ट को जितना ओपन करेंगे, जितना ब्रॉड करेंगे, गोना बी नाइस। आराम से इस तरह से हाथों को पीछे खींचिए और ऊपर की तरफ, नीचे नहीं ले जाना है, ऊपर और पीछे की तरफ खींचेंगे। आराम से रिलैक्स करें, यहीं पर रुकने की कोशिश करें एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। होल्ड करें, सांस लेते रहें, कोशिश करें, पेशेंस करें थोड़ा सा उधर रुकने का। It's all about patience, it's all about staying in an asana. जितना देर ज्यादा उसमें रुकेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। आराम से अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को अनलॉक करेंगे, सांस भरते हुए और आगे रेस्ट करेंगे, आगे रेस्ट करेंगे, सांस खाली करते हुए अब वापस अपने पैरों को सीधा करना शुरू करेंगे। टेक द सपोर्ट ऑफ योर टोज एंड कम बैक। सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाएं, सांस खाली करते हुए अपने हाथ बिल्कुल नीचे छोड़ दें। Every time you come out of a asana, you must feel like relaxed, so you have to just inhale. अगर आपका पूरा exhalation और inhalation का जो सिस्टम है वो टूट जाता है, so when you are coming out, you have to inhale and go up, and when you have to relax, just exhale down. अब यहाँ से अगला आसन है बद्ध कफोनी प्रस्थ उत्तानासना। बद्ध कफोनी means बद्ध कफोनी प्रस्थ हस्त उत्तानासना। अब यहाँ से अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे, लाइक 6 इंचेस, आधा फीट का गैप मेंटेन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है। नॉट मोर देन योर पेल्विस, अपने शोल्डर से कम रखना है अपने पेल्विस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से दोनों हाथ सांस भरेंगे ऊपर लेकर जाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सांस भरेंगे पूरा ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी हथेलियों को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे और अपने इस हिस्से को, अपनी पाम के लोअर हिस्से को, बेस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, लाइक स्ट्रेचिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ योर हैंड, अपनी आर्म का, इसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अब यहाँ से अपने हिप्स थोड़े बाहर, आप देखेंगे जैसे आप इसे स्ट्रेच करेंगे हिप्स विल स्टार्ट कमिंग आउट नॉर्मली। सांस भरे एक बार, फिर से सांस भरे, सांस खाली करते हुए इस आर्च को मेंटेन करते हुए स्टार्ट कमिंग बैक, अपना स्टार्ट कमिंग डाउन। आराम से अपने पेल्विस को पीछे की तरफ पुल करें, लोअर बैक को बेंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जब आप लगे कि आप 90 आ चुके हैं या फिर इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं, स्टार्ट बेंडिंग योर नीज, अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करें, घुटनों को मोड़ना शुरू करें। ट्राई टू मेंटेन द लाइक स्ट्रेटनेस ऑफ द स्पाइन, इसे बेंड नहीं करें। अपने घुटनों को बेंड करेंगे, और ज्यादा बेंड करेंगे, घुटने बेंड करेंगे और ज्यादा। अब यहाँ से भी दोनों कोहनियों को ग्रैब करें, दोनों एल्बोज को ग्रैब करें और आराम से जस्ट रेस्ट योर चेस्ट ऑन योर नीज, अपनी थाइस पर आराम से रेस्ट कर देना है। हल्का सा बेंड करके रखेंगे एंड यू हैव टू स्टे इन दिस पोजीशन। अगर आप कर सकते हैं, आपको कुछ भी तनाव नहीं बनाना है। आप देखना है आपको उत्तान आसन में कभी भी आपको आपकी रीढ़ पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप, योर स्पाइन इज नॉट मेड फॉर लिफ्टिंग वेट्स, इट इज मेड फॉर controlling the functions of the organ. It is made for like passing the circulation all the way, or passing the signals all the way from brain to your different parts of your body. तो इसको बिल्कुल भी बेकार नहीं करेंगे। लोअर बैक को ज्यादातर योगा प्रैक्टिशनर अपना खराब करके रखते हैं। I have been dealing with teachers, I have been teaching teachers, like more than 3,000 teachers have been taught by me. उसमें से कंपटीशन विनर्स जो हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशंस विन करते हैं, वो धीरे से कान में आके बोलते हैं कि आचार्य जी, स्वामी जी, यहाँ पर पेन है, ये कमर दुखता है, ये सब प्रॉब्लम उनको होता है। They keep sleeping with the steam pads or heating pads every night.
तो वो नहीं करें अपने साथ में, अपनी लोअर बैक को बिल्कुल खराब नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द कुंडलिनी. आपका most important muscle of your body, the psoas, which is connecting the upper limb and the lower limb of your body is here. अगर आप इसे बहुत ज्यादा खेलेंगे, इसके साथ बहुत ज्यादा इसको मोड़ेंगे, तो you will end up by having problems with your psoas muscle. So please take care of your lower back all the time. Bending के चक्कर में, किसी को impress करने के चक्कर में, don't just end up with a ruined lower back. आराम से रेस्ट करेंगे. अगर आप आराम से कर सकते हैं, तो you have to just stretch your upper body a little bit and just try to straighten up your knees. बस धीरे धीरे, अंदर प्रेशर नहीं लगाएंगे. So your brain should be relaxed. आगे से दबाना नहीं है, पैर पकड़ के अंदर सर नहीं घुसाना है. You have to just stay relaxed. आराम आराम से. यहाँ पेन होगा, posterior knee में पेन हो सकता है, because mostly आपके 80% posterior knee damage हो जाते हैं. आराम से यहाँ से सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, बैठना शुरू करेंगे, सांस खाली करते हुए, सांस भर के सांस खाली करते हुए आराम से नीचे बैठना शुरू करेंगे. So this is a proper extension to your spine. This is the best extension you can give to your spine. अब आराम से इसी अवस्था में बैठे रहेंगे थोड़ी देर. आपके जो आर्मपिट हैं, उनमें अंदर घुटने होने चाहिए. आर्मपिट्स के अंदर, आपकी आर्मपिट्स के अंदर आपके घुटने हो. अब यहाँ से आराम से अपने पैर फ्लैट करके जमीन में बैठ जाएं. अपने पैर फ्लैट करके जमीन में बैठ जाएं, हिप्स पर बैठ जाएं. दंडासना, प्रस्थहस्ता दंडासना. This is good for your heart. This is good for your cardiac health. This looks very simple, but it is going to be really tough. आप इसे 1 मिनट मेंटेन करेंगे, तो you will just analyze how difficult it is to maintain like that. अब यहाँ से अपने हिप्स के बराबर में हाथ रखेंगे एक बार, और थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे, like exactly the floating ribs. अपने रिब केज को बाहर निकालेंगे, and try to just experience that your spine is straight. पूरा सीधा है. You are not sitting on your tailbone or you are not sitting on your sacral bone. आप अपने fused वर्टेब्रास पर नहीं बैठे हैं, बिल्कुल आप अपने हिप्स पर, हिप बोन्स पर बैठे हैं, लेकिन आपकी टेल बोन फ्री है. मोस्टली लोगों का फ्री नहीं हो पाएगा, बिकॉज people are like people are having totally ruined pelvical health. उनका pelvis जो है, interior pelvis, वो bend नहीं होता है. So that's why people bend from the lower back. आप यहाँ से bend करना शुरू करेंगे, so you will stop bending from here. Then your mental health, your cardiac system and your digestive, your reproductive will start improving so nicely. अब यहाँ से अपने हाथों से ऐसे push करें, chest को आगे निकालें. अब आराम से rest कर दें अपने hips को नीचे. अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करें, पूरा जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं. अपने टोज को अपनी बॉडी की तरफ स्ट्रेच करें, अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ खींचना है टोज को. यहाँ से दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड में ले जाएं. सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधों के लेवल में ले जाएं. सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए हथेलियां पीछे घुमाएं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और इंटरलॉक योर फिंगर्स. अब यहाँ से यू हैव टू मेंटेन दिस फ्यू थिंग्स. अब यहाँ से सांस भरें, एक बार सांस भरें, सांस खाली करते हुए स्ट्रेच करें पीछे की ओर. चेस्ट को जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकालिए. टोज को अपनी तरफ खींचिए और नीज को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए. पूरा पुश कीजिए नीज अपनी थाइज को ग्राउंड की तरफ. एंड ब्रीथ कीजिए. आराम से स्टार्ट ब्रीथिंग. मेंटेन दिस पोजीशन एंड स्टार्ट ब्रीथिंग. आराम से सांस लेते रहें, आराम से सांस लेते रहें. ट्राई टू मेंटेन इट फॉर अ मिनट और जस्ट 30 seconds. दैट वुड बी इनफ. आराम से मेंटेन करें. Try to experience the peace and calmness inside the body. इसको उछल कूद की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है. आराम से अब अपने हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं. अनलॉक करें, ऊपर ले जाएं. इनहेल करें, ऊपर ले जाएं और आराम से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स योर टोज एंड रिलैक्स योर हैंड्स डाउन. अपने पंजों को हल्का कर दें और अपने हाथों को नीचे ले आएं. अब यहाँ से अगला आसन है गोमुखा आसना. गोमुखा आसना is also good for the cardiac health again and for your legs also, for the strengthening and giving a proper stretch or proper movement in sideways. आपका glutes को free करने के लिए. Mostly people do have very stiff glutes. आराम से अपना, आप ध्यान से देखेंगे, अपना लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़िए और राइट पैर की उस तरफ रखकर पीछे की तरफ एंकल को खींचिए. नीचे वाले पैर को मोड़कर उसके अपोजिट साइड में ले आइए. यू डोंट हैव टू सिट ऑन योर हील्स. आपको अपनी हील्स पर नहीं बैठना है. अपनी एड़ियों को बाहर रखिए. एड़ियों के ऊपर नहीं बैठेंगे, हिप्स के ऊपर बैठना है आराम से. अब यहाँ से देख रहे हैं जैसे कि आपका
राइट लेफ्ट पैर ऊपर है तो इसी तरह से आप अपना इसमें क्रॉस आता है, अपना राइट हाथ ऊपर ले जाएं, राइट हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और पीछे की तरफ फेस करें और अपने कमर को अपनी हथेली से टच करें, ऐसे अपनी कमर को अपनी हथेली से टच करें। नाउ इस हाथ को इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए बेंड करें और दोनों हाथों को ऐसे पीछे से इस तरह से लॉक कर लें। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ को ऐसे लॉक कर लेगा। नाउ ट्राई टू जस्ट ब्रिंग योर शोल्डर्स बैक, जितना शोल्डर्स को पीछे ला सकते हैं अपनी एल्बोज को और पीछे लाएं और पूरा अच्छे से ग्रैब करें और छाती को जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकालिए। अपने शोल्डर्स को पूरा रोल करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट नाइसली। आराम से इधर होल्ड करेंगे, आराम से होल्ड करेंगे गोमुखासना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, नी का प्रॉब्लम होता है, फ्लैट फीट होते हैं, साइटिका नर्व का जो पेन होता है उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे ऊपर है जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, दैट्स लाइक ह्यूज, लाइक वेरी डीप सब्जेक्ट। आप एक बार बस अभी इसे समझ लें। We can conduct another sessions after some time about this detailing sessions. ये आप दोनों साइड से आपको करना है। आराम से सांस भरते हुए आराम से अनलॉक करें अपने हाथों को, ऊपर ले जाएं दोनों हाथों को सांस भरते हुए। एक्सहेल, अपने दोनों हाथों को नीचे छोड़ दें। अब दोनों पैरों को अनलॉक करें एंड स्विच योर लेग्स। अनलॉक करने के बाद स्विच योर लेग्स। I didn't get that. Could you try again? I'm sorry. आराम से और अब दोबारा से लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। एक एक मोमेंट आपके ब्रेथ के साथ पैरेलल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सांस भर लिया और अब हाथ ऊपर लेकर जाएंगे या फिर आपने पहले हाथ ऊपर ले गए और फिर सांस भरेंगे। इट शुड बी लाइक आपके दोनों साथ में चलने चाहिए इस तरह से। जब पूरा सांस भर जाए तो हाथ अपनी पोजीशन में एग्जैक्टली पहुंच जाए, इस तरह से एवरी मोमेंट शुड बी लाइक दैट। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। चेस्ट को पूरा खोलें, अपने स्कैपुला को पूरा अंदर की तरफ रोटेट करें, पीछे अपने शोल्डर्स को पूरा लेकर आए, थोरेसिक रीजन को पूरा अंदर की तरफ ले जाएं। आराम से मेंटेन करें। Just try to maintain, just try to experience the peace, just try to experience the calmness or the botheration inside. जो भी है उसको बस ध्यान से देखते रहिए एंड फोकस रखिए कि आपको एडियो पर नहीं बैठना है, दोनों हिप्स जमीन पर आराम से लगे हों और आपके शोल्डर्स पूरे बाहर निकले हों। इफ यू आर ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ पीछे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप क्रॉस ऐसे क्रिस क्रॉस करके अपने पैरों से नहीं बैठ सकते हैं, तो आप पीछे कोई टॉवल, कोई भी कपड़ा, कोई भी बेल्ट ऐसे यूज कर सकते हैं एंड जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट more and more. Someday you will reach up to that point that you can grab your hands also. It doesn't happen in one day, but if you practice this sequential style of yoga or the geometrical way of yoga or the anatomical or the physiological way of yoga, then you will understand that sequential things give you like flexibility more faster. आपकी mobility ज़्यादा जल्दी आएगी और ज़्यादा fast आएगी if you are working in a sequence, because you are redirecting blood into specific areas according to the physiology of it. आप biomechanics को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए body में blood को एक specific part में rotate करा रहे हैं and you are just targeting your heart all the time. आप आराम से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और आराम से सांस खाली करते हुए रिलैक्स कर दें। Now open your folded legs, आराम से अपने पैरों को खोल दें and try to sit in Padmasana. If you can sit in Padmasana, lotus pose में बैठ सकते हैं, it's well and good. If you cannot, then simply just use one leg. आप आराम से देखिए, पद्मासन में दोनों आपके फीट्स को थाइस के ऊपर रखा जाता है, बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, so just इसको उतारिए बेटे एक बार। इसको उतार के एक पैर नीचे रखें और एक पैर को एक से दबा लें। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आराम से समझना है कि पार्श्व पद्मासन कैसे करना है। आपको जो पैर आपने ऊपर रखा है, जो थाइस को आपने ऊपर रखा है, उसको आपको ग्रैब करना है इस अपोजिट हाथ से। इस अपोजिट हाथ से लोटस को नीचे, हाँ सब नहीं कर पाएंगे ना लोटस पोज। सो those who can do the lotus pose, it's well and good. So you can start from any of the knee. लेकिन जिन्होंने पद्मासन नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने राइट पैर अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखा है, तो अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट नी को ग्रैब करना है इस तरह से। आप सांस भरते हुए इस हाथ को ऊपर उठाएं
पूरा सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और सांस खाली करते हुए साइड में जाएं, एक्सेल। जितना एक्सेल कर सकते हैं जाएं, एंड डोंट थिंक कि आपका यहाँ से कुछ टूट जाएगा, ये एआईजीआई ग्रुप आपका नहीं टूटेगा, बल्कि आप अपने इंटरकोस्टल्स को पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, आपको वहां से उसे ग्रैब करने के बाद उस बेंड नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बेंड, यू हैव टू स्ट्रेच। साथ में स्ट्रेच करो, ऐसे, हाँ ऐसे स्ट्रेच करना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है। ये इसको ग्रैब इसलिए किया है, इट इज गिविंग यू सपोर्ट, सो यू आर गोइंग इन अ प्रॉपर लाइन। आप आराम से इतना नीचे जा सकते हैं कि आपका शोल्डर आपकी थाई तक चला जाए, आराम से इस तरह से। So it may give little pain here, little pain here, little pain here also. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं जाना है, आराम से नेक को रिलैक्स कर दें, ऊपर की तरफ देखें दृष्टि और सांस लेते रहें। You will experience that जितना आप धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, you won't block it, then you will find that you are getting this mobility, you are getting flexible every second. आपके मसल्स को ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन मिलता रहता है और आप आराम से धीरे धीरे आप फील करते जाएंगे that you are going down and down. Just you have to trust yourself and nothing gonna break. Nobody is pushing you. आप आराम से धीरे धीरे छोड़ते रहें। आराम से सांस लेते रहें, नीचे जाने दें, सांस लेते रहें, स्ट्रेच करें हाथ को स्ट्रेच करना नहीं भूलेंगे। Don't forget to stretch the hand. पूरा स्ट्रेच करते रहें। It should be a conscious movement. You just don't have to drop it like that. आराम से खींचते रहें उसे बाहर की तरफ। सांस भरते हुए वापस आ जाएं, सांस भरते हुए पूरा वापस आ जाएं, सांस खाली करते हुए रिलैक्स, हाथ नीचे छोड़ दें। अब लेफ्ट पैर को स्विच करें, स्विच योर लेग्स, अपना लेफ्ट पैर ऊपर लेकर आए राइट थाई के ऊपर। यस, अब आराम से ग्रैब करें, अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को ग्रैब करें और आराम से सांस भरें, पूरा सांस भरकर हाथ ऊपर लेकर आए, एक्सहेल करते हुए गो, आराम से सांस धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए, सांस के साथ साथ आराम से स्ट्रेचिंग, इसको आराम से स्ट्रेच करें। तो ये हाथ स्ट्रेच करते रहें, निरंतर इसको स्ट्रेच करते रहना है बाहर की तरफ। सो यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू वर्क ऑन योर इंटरकोस्टल्स एंड योर हार्ट वॉल्स। पूरा आराम से रिलैक्स करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल फील द सडन चेंज। आप आराम से इसे लूज करते चले जाएं। It's like the easiest sequence of asanas. There are 3 levels. आप यहाँ पर 3 levels experience कर सकते हैं, but it's like if you practice this for 21 days, you can get initiated to the next level also, and after that next. So you would never ever get heart attack or any heart issues or any BP issues or any rise of magnesium, potassium and sodium issues in your blood. आपका दिल हमेशा अच्छे से काम करेगा, आपका respiratory system plus your cardiac system will work, cardiovascular system will work in coordination so nicely. आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए गुड रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप याद रहे कि उन दोनों का कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहे। You should never just directly like think of working on your cardiovascular only. आराम से खींचते रहें हाथ को, सांस भरते हुए वापस ले आए, सांस भरते हुए वापस ले आओ, सांस भरते हुए वापस आ जाएं, सांस खाली करते हुए नीचे रिलैक्स आराम से छोड़ दें। अब आराम से अनफोल्ड योर लेग्स एंड जस्ट लाई ऑन योर बैक। आराम से सीधे लेट जाएं, अपनी कमर के बल सीधा लेटेंगे आराम से। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन आल्सो दैट मच, जस्ट कीप लिसनिंग टू माय वॉइस। आप आराम से सुनते रहेंगे, सो यू विल बी एबल टू डू इट। अब आराम से यहाँ से धीरे धीरे अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, थोड़ा सा फोल्ड करें अपने पैर को and try to just take support of your palms and sit. आराम से बैठना शुरू कीजिए। अब यहाँ से अपनी एल्बोज को अपने शोल्डर्स के नीचे ले आएं, अपनी एल्बोज को अपने शोल्डर्स के नीचे ले आएं, अपनी एल्बोज को पूरा अपने शोल्डर्स के नीचे ले आएं and try to just lift your hips up. अपने हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएं, हिप्स को ऊपर उठाना शुरू करें और यहाँ से अपनी पाम्स को अपनी कमर के नीचे लगा लें, सेतु बंधासना। अपनी पाम्स को अपनी कमर के नीचे लगाएं, पाम्स को असल में नहीं लगाना है, अपने फिंगर्स को साइड में रखना है। If you can see, आपकी फिंगर साइड में रहेंगी, आपका जो नीचे का हथेली का नीचे का हिस्सा है वो नीचे रहेगा कमर के और अंगूठे अंदर रहेंगे, thumbs will be inside। फिर आप आराम से अपने शोल्डर्स को नीचे रेस्ट कीजिए। Now start straightening your legs also। आराम से अपने पैरों को सीधा करना शुरू करें। सेतु बंधासना, अपने कमर के नीचे के हिस्से में आप समझिए अपने लंबर रीजन पर प्रेशर नहीं आने देना है। Your lumbar is very important region। आपका जो L4 से लेकर L5 तक का जो हिस्सा है, it is actually keeping your emotional health, it is keeping your reproductive health, it is keeping your digestive health। आपको
ध्यान रखना है, you don't have to just play with your lumbar region. ये bend करने के लिए इतना ज्यादा नहीं बना है जितना कि ये twist करने के लिए बना है. This is for like rotational movements inside your body. आप याद रखिए कि आप इसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पीछे बेंड करेंगे तो यहाँ पर आपकी वर्टिब्रेस वैसे ही आपके पेट में इस तरह से स्पाइन होता है. यहाँ से आप देखेंगे हमारा ऐसे ही ऑलरेडी वो होता है तो हम इसे ज्यादा बेंड करते हैं तो पीछे से हमारे वर्टिब्रे इंटैक्ट होना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से टच होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो डिस्क होते हैं फ्यूज्ड होती हैं, जो फ्यूज्ड डिस्क होती हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग एक ऐसा रबर स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या है प्रेशर आने की वजह से हर्निएशन या बल्ज या फिर टीयर जैसी बीमारियां, स्लिप जैसी बीमारियां हो सकती हैं. और इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिसीज आल्सो. वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पेन वाली होती है, आपको पेन आ सकता है. सो सेतु बंधा में यू आर गिविंग सपोर्ट टू योर बैक फ्रॉम योर हैंड्स एंड यू आर रेस्टिंग, यू आर पुटिंग ऑल द प्रेशर ऑन योर एल्बोज, नॉट ऑन योर शोल्डर्स आल्सो. और धीरे से आराम से अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करें. जो सीधे नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन कीप देयर नीज बेंड. अब आराम से यहाँ पर चेस्ट को पूरा बाहर निकालेंगे. उसको करने के लिए एल्बोज को पूरा अंदर लेके आना है. एल्बोज को पूरा अंदर लेकर आ जाएंगे आराम से. एल्बोज बिल्कुल अंदर की तरफ होंगी, लोअर बैक के नीचे, और चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करें आराम से. मेंटेन इट. इससे ये आपके ब्रेन को बहुत सूदिंग एंड बहुत रिलैक्स बनाता है और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को राइज करता है. आप लेग्स आराम से सीधा करें. जिनके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक का एक प्रॉब्लम आ चुका है, दूसरा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा. इफ यू प्रैक्टिस ऑल दिस आसनास एंड यू प्रैक्टिस सेतु बंधा फॉर 1 to 2 minutes like twice a day in the dawn and the dusk time, आप ये करेंगे तो you will never have any blockage in your arteries. अभी हमारे थेरेपी सेंटर में जिनके 80% ब्लॉकेजेस हैं, they are being treated and they are working very fine. तो आप याद रखिए, to keep your arteries free of any blockage, free of inflammation, free of any cyst formation, आप आराम से सेतुबंध का अभ्यास कीजिए. जो आपको ये बताया है, it gonna keep your cardiac health so good. आराम से मेंटेन करते रहें, आराम से मेंटेन करके रखें. जब आप थक जाएं तो सांस भरते हुए आराम से नीचे छोड़ दें. अपने हिप्स को आराम से छोड़ना शुरू करें. अपने नीज को फोल्ड करें, नीज को फोल्ड करें और सांस भरते हुए नीचे छोड़ना है. सांस भरते हुए और सांस खाली करते हुए अपने पैरों को सीधा कर दें. सांस खाली करते हुए अपने पैरों को सीधा कर दें. यहाँ से अगला आसन है एक पादा मेरुदारा कुंचना आसना. एक पादा मेरुदारा कुंचना आसना. अब यहाँ से एक पैर को फोल्ड कीजिए, अपने एक नी को. Never forget, ever in your life, whenever you practice any back bends, you must perform twistings with your spine, else you're gonna end up having back pains after some time in your back. It's very bad if you bend your back backside and you never do twistings after that. So twistings are must after back bends. यहाँ से अपने एक लेग को फोल्ड कीजिए. सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, आपने अगर अपना लेफ्ट पैर लिफ्ट किया है तो उसे राइट साइड में ले जाकर रेस्ट करना शुरू करें और आपको उसके अपोजिट साइड में अपने नेक को रोटेट करना है. एंड जिस साइड में आपने अपने नी को रेस्ट किया है उसी हाथ से उसे नीचे दबा लें इसी तरह से. एंड ट्राई टू जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स, बोथ द शोल्डर्स ऑन द ग्राउंड. आराम से, तो आराम से सांस लेते रहें. इट इज द बेस्ट आसना फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जिनको पेट साफ नहीं होता है, जिनको इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जिनका कोलन भर गया है, जिनको अपेंडिक्स के पेन होते हैं, जिनको हर्निया का इश्यूज है, या फिर किसी को यूट्रस कोलैप्स हो गया है, या फिर वुमेन्स में मेनोर्ज या मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है इन एन अर्ली एज, या फिर आपको बहुत हैवी और थिक फ्लो आते हैं इन योर मेंसेस, दिस इज बेनिफिशियल फॉर इट. आराम से सांस लेते रहें. दोनों शोल्डर्स को रेस्ट करेंगे, नीचे वाले लेग को एक्सटेंडेड रखेंगे. एक लाइन में रहना है. आराम से आपकी नेक दूसरी डायरेक्शन में होगी, नी इस साइड का नी दूसरी डायरेक्शन में जाके रेस्ट होगा. सांस भरते हुए नी को ऊपर ले आए, सांस भरते हुए नी को ऊपर ले आए और आराम से सांस खाली करते हुए रिलैक्स कर दें. दोबारा से सांस भरते हुए राइट नी को ऊपर लाएं और एक्सहेल करते हुए ब्रिंग इट टू द अपोजिट डायरेक्शन एंड रेस्ट इट इन द अपोजिट डायरेक्शन. आराम से घुटने को नीचे रखें, अपोजिट हाथ से उसे ग्रैब करें, नीचे दबाएं एंड टर्न योर नेक टू द अदर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. नाउ रिलैक्स. आराम से रिलैक्स करेंगे.
सांस भरते हुए वापस आ जाएं. You can long waltz this asanas for at least 1 minute or 30 seconds. There is no restrictions for even going or exceeding the time also. Just like there are no contradictions, no obligations that is imposed on this asana, you have to just simply practice them as long as you can. I would suggest to do every asana. If it is like two-side one, like you have to perform from this leg and that leg, or this direction and that direction, you can perform that kind of asana for 30 seconds, like combining 1 minute. And if the asana is just like one directional, then you can practice it for 1 minute and relax it. अब आराम से दोनों घुटनों को छाती की तरफ लेकर आएं. The best and my favorite asana. आराम से इसको अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे. यहाँ से अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के अंदर लेकर आएं. अपने दोनों घुटने चेस्ट के बाहर. अब यहाँ से अपने फीट्स को ऊपर राइज करना शुरू करेंगे और अपने दोनों कोहनी अंदर से लेकिन हथेलियां बाहर से तलवों को ग्रैब करेंगे. मुदित शिशु आसना, ब्लिसफुल बेबी पोज. आराम से अपने हिप्स को नीचे रेस्ट करना शुरू करेंगे. दिस इज गुड फॉर वुमेन्स हेल्थ. ये वुमेन्स हेल्थ में जितने भी वुमेन्स डिसऑर्डर्स होते हैं, women's reproductive based disorder होते हैं, it's extremely good for that. It is extremely good for blissfulness. It is extremely good for the secretion of DMT in your body. Like आपको ये happy feel कराएगा. It is good for enhancement of the your reproductive and your respiratory system. आप देखिए आपका कैसे स्ट्रेच होकर आप रिलैक्स वे में बहुत ज्यादा ब्रीथ करते हैं and your reproductive system is stretched. आपका lower base area बहुत stretch होता है. Even if you have a pressure on your sacral region which allows like all the blood to go through inside. तो आपका ये बहुत ज्यादा रिलैक्स करना है. आपको अपने घुटने टच कर सकते हैं. It would become little tough. तो धीरे धीरे करें, ज्यादा नहीं करें. You have to avoid lifting your hips. Hips को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, तो रिलैक्स करो ज्यादा नहीं. अपने तलवे हमेशा ऊपर रखिए. एल्बो का सपोर्ट लेकर उन्हें बाहर धकेलना है थोड़ा नीज को, और हथेलियों का सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ थोड़ा पुश करना है. पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट टेक इट इजी, जस्ट स्टे नॉर्मली इन दैट पोजीशन. यू विल फील सो गुड. आराम से यू कैन फील लाइक ए बेबी. आराम से एक बच्चे की तरह यू कैन जस्ट नो लाइक ट्विस्ट लाइक दैट. एक बार वो घुटना रखिए, एक बार वो. आराम से फील रिलैक्स्ड. और आराम से अपने पैरों को धीरे से सांस भर खाली करते हुए बॉडी से स्ट्रेच कीजिए. सवासन में लेट जाएं. दोनों हथेलियां ऊपर की ओर होगी. And I request everyone to just stay in that position at least for 30 seconds, at least for 1 minute, and do nothing. Just drop everything. Don't stop watching your screen also. Relax, close your eyes. Look at every joint of your body. Start looking from your ankles. How you feel with your toes. How's your ankles? How's your knees? How's your thighs? How's your hip bones? How's your pelvis? How's your lower back? How's your middle back? How's your shoulders? How's your elbows? How's your wrist? How's your head? एक बार आराम से पूरी बॉडी को एनालाइज करें. Now bring your focus to your heart. एक बार अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर ले आएं and just witness that it's beating. It's beating with a great pace. It's beating with a great relaxation. Now bring your concentration, bring your focus to your navel, and try to focus on the moment as you inhale and as you exhale. Your navel is going up and down. Try to control the movement of your navel. Try to make it more slow. Try to make it more slow as the breath is. धीरे धीरे से अपनी नेवल का कंट्रोल करें और आराम से बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दें. पूरा शिथिल छोड़ दें शरीर को. Experience that you don't have any energy to just get up. It's just a physical body. You don't belong to it, and just drop all the weight on the ground. एकदम जैसे जमीन पर you are dead and you are lying on the ground. मन ही मन एक बार उनका उच्चारण करेंगे. मन ही मन आराम से सांस भरें. Keep your eyes closed. Rub your hands. Rub your hands until and unless you feel little warm sensation while rubbing. Then rest on your eyelids. Pressure नहीं लगाना है. Rub on your face and just get up. आराम से बैठ जाइए. This is a session. Else you need to relax at least for 10 minutes or 5 minutes.
Now, if I would take some questions. If you have any questions, you can rotate it like that. Thank you, Vishwa. Thank you. But you'll have to see. Yes. Can you I don't please, have to see. please hold it? Okay, I texted him that I'm going to switch out. You can moderate the question and answers. Camera. Now I hello. Now I Please. request the participants to ask the questions if you have. I think Neeraj ji and Shashi Bhushan ji was not practicing, yes? Yeah, actually, I'm sitting in my office. So Okay, it's okay. I was seeing the Okay. demonstration. Okay. Ji. Shashi Bhushan, your voice is a little low. Please, I think you can just moderate the question and answer session. Acharya will answer the questions. Just so those who want to ask the question can raise their hand, and Shashi Bhushan will call them on, or you can type your questions in the chat. Acharya ji, one question is there. How to work on tailbone pain? Ji, one second. Just let me. I'm not used to this. Yeah. Technology. Now you are clearly audible, Acharya. Okay. So somebody asked how to work on the Pain in the tailbone. Yes. okay tailbone. It's like क्या होता है? Do you remember that when we are child, when we are in schools? I can still remember because I'm not that old, so I can remember the time from my school now. जब हम धीरे से स्कूल में बैठे होते हैं और पीछे से कोई मजाक में हमारा चेयर हटा देता है. You remember that time? और हम धम से नीचे गिर जाते हैं. हमें उस टाइम में पता नहीं लगता है, लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंजरी हमारे टिप बोन को आ जाता है. हमारा कार्स का जो सिस्टम होता है, जिस तरह से आप हमारी कार्स की सीट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दे आर मेड लाइक दैट वी मस्ट सिट ऑन आवर टेल बोन्स. हम अपने टेल बोन पर बैठें, हम अपने सैक्रल रीजन तक हम चीजों को बेंड कर दें. सो इट्स नॉट लाइक कि उसे एक दिन में करेक्ट किया जा सकता है. अगर आपको अपने टेल बोन का पेन करेक्ट करना है, आपको अपने इंटीरियर पेल्विस का मूवमेंट एक्टिवेट करना होगा. हमारे टेल बोन में पेन आना शुरू होने से पहले बहुत सारे गलत चीजें हमारी बॉडी में हो जाते हैं. लाइक हमारा स्वास मसल जो है वो इनएक्टिव मोड में चला जाता है. As is the muscle which is responsible for the awakening of the Kundalini also. Kundalini is not, according to me, it's not a mystic or it's not a, it's like beyond the science thing. It's purely science. It's not just like understood by sages. I've already projected them like they are something spiritual or magical things. It is not like that. It's like our body is a magic by itself. So you need to correct the movements of your pelvis, and before correcting the movement of your pelvis, you need to correct the base of your body, like your legs. आपके पैर सीधे हैं कि नहीं? I told about Samasthiti. Though it's like it's a request on IIT that they want to execute an abhyasa. Else I hardly like initiate any specific sequence for any request also, because लोगों का body का problem बहुत ज़्यादा होता है. They already have like a very ruined physiology, very ruined alignment of the body, क्योंकि कार चलाना, खड़े रहना, ये सब प्रॉब्लम होता है. आप पहले समस्थिति ठीक करें. समस्थिति के बाद जब आप बेंड करेंगे, you will have extreme pain in your posterior knee, extreme pain in your hamstrings, क्योंकि पीछे जो आपका posterior body का जो fascia होता है वो पूरा डैमेज हो चुका होता है. And fascia is been recognized as one of the most important system of our body now. It's like it have got its own intelligence also. लेकिन ये पिछले 6-7 सालों से ही माना गया है, not even 10 years. पहले डॉक्टर क्या करते थे, कहीं से किसी को सर्जरी करना है तो काटेंगे, और फिर वो जो गंदी गंदी सी चीज होती थी, जो पस जैसी चीज होती थी, उसे पूरा ऐसे पकड़ के निकाल के डस्टबिन में फेंक देते थे. That was fascia. Now they recognize that we don't have to throw it out because body takes a very long time to recover from the fascia. That's why a person cannot attain the proper moment of flexibility after going through a surgery also, because the fascia has been cut. Fascia क्या है? Soft tissues का soft tissues का एक connections होता है which runs through all over the body and which is responsible for keeping you in shape.
That is the most important thing. If you don't have a proper fascia, your shape will be always unaligned. आपकी body का हमेशा disorder ही रहेगा. कुछ ना कुछ problem. No matter if you are a gymnast, no matter if you are a contortionist, no matter if you are a bodybuilder, you will always have problem if your fascia is not on its exact position. तो fascia जो योग में जिसे बोला गया है कि चेतन मन को ध्यान लगाओ, तो वो जो चेतन मन पूरे शरीर में घूमता है ना, आंखें बंद करके जो हम अपनी एडी को फील कर सकते हैं, एक एक बॉडी पार्ट को स्पेसिफिकली वी कैन फील, इट इज बिकॉज ऑफ fascia. Fascia have got a proper direct connection with our brain, और वो उसका बहुत मैजिकल एबिलिटी होता है. It can become solid in 1 second and it can become liquid in 1 second. तभी इसी वजह से है कि अगर आप जानबूझ के दीवार में मुक्का मारें तो nothing will happen. अगर गलती से हल्का सा एल्बो कहीं लग जाए तो it gives you kind of electric shock. So that's how it is. पहले ही when you want to hit the wall, तो आपका जो fascia है वो बिल्कुल solid बन जाता है. Supports your brain is like coordinated with it. So brain knows that you are going to hit and you are going to harm your hand. So it becomes solid. So not aware of the movement and you hit any solid surface, then you have that pain because it's in liquid state. So the sensation goes directly to your bones, to your fibers, to your tendons, to your muscles, to your other system. So you need to correct your fascia, and then we can lead up to the pain or the main cause of the tailbone. I cannot properly even tell you that why do you have pain in your tailbone. I'm sorry, because I need to diagnose it first. So that's what I can suggest to in general. Ji. Sir, so can I ask a question? Vedant ji, namaste. Ji. Sir, like I have been running from quite many days, and sir, I have like this pain coming in my shin bone. And Sorry? sir, can you in my shin bone? हाँ. Sir, like are there some exercises by that I can cure this pain? I'm sorry, I'm not getting you. Like you have pain in your shin bone. So Yes, sir. he's saying that he has been running for a long time and he has developed pain in his shin bones. So you trying to become a horse or No, sir, I'm trying to See, let me marathon tell or half you marathon. why you might have a pain in your. It's like I can just talk about general reasons. No, I cannot be a doctor in front of a camera. I'm sorry, because it's a proper diagnosis required. But now I can tell you like basic things. Why do people have this kind of pain without any accidents or without any physical, it's like happening or koi tragedy ka bina. So it's like humans' bodies are not made to just live in planes. Do you know that? Yes, We sir. made everything plain. हमने सब कुछ plain बना दिया because of our comfort. हमने हर जगह फर्श बना दिए, सीढ़ियां भी फर्श की बना दी, हमारे feet एकदम बिल्कुल अच्छे अच्छे से रखे जाते हैं. Our roads are also so nice that we don't face anything. Like हम सब कुछ हमने flat बना दिया है so that we face less friction. हमें less friction face करना पड़े, हमें कम energy लगानी पड़े, हमारा stamina ज़्यादा use ना हो, endurance ज़्यादा use ना हो, अपने comfort के लिए we made everything plain. So it's like if you are running in planes, you will have pain in your shin bone, you will have pain in your heels also, you will have pain in, like you can have pain in any of the part of the area of, or you can start hurting your knees also. Means like after a period of time, you will find that your posterior knee is totally damaged and your anterior knee, because of too much of usage, because too much of running in the planes, you will start having pain, और वो कट वाला आवाज आना शुरू हो जाएगा. So what you have to do is that try to just run in like not on roads, in a park, and it little like thoda is tarah ka ground mein, and try to just also walk without shoes also sometime. Okay, so then it's just if you are too much into running, that's why you are having it. It is for sure because of you are running in plains or on the road. पक्के में मत दौड़ो, कच्चे में दौड़ो. That would be like I could suggest. जी. Yeah. Shashi Bhushan, you can read the questions. Also have a question. जी. Yes. Hello, sir. Can I ask? Like, I have another question. Yeah, please go on with that. I have 10 How more do we minutes. get You can more ask. confident about? जी. Okay, sir. So, जी, so how do we like, get accountable of our decisions? Like, there is some difficulty while we are taking action, so we have to take a decision. So,
how do we get more surety of it? Because sometimes we don't know what is the right thing or what is the wrong thing. देखिए, you were not in the last session, I think. You didn't join yesterday. No, sir, I was there, sir. You were there. So I mentioned something about the mana, the manomay kosha. देखिए, मन का क्वालिटी है. It's not a disorder or a disease, or it's not a disability. It's a quality to just think in two directions. Okay. So when you have a good functioning body, you have a good functioning, breathing system, the pranic body inside, then you have this mana. If you are alive, you will think in two directions. It's impossible that you can think in just one direction. You will have thoughts which will give you like two options on every decision. You want to make a decision, you have two ways. You may have three more ways, you may have 10 more ways, but you will always have two ways. It's about like you are thinking about how to give more accountability to the beneficial one, which is which could benefit you all the time. So what you have to do is that practice with your brain. Try to give more fuel to your brain. You cannot do it. I cannot tell you because I don't know the situation. I can tell you about one situation, but I can not tell you about every situation, because every minute we are going through a different situation. Yes. So you and me, we both are equally intelligent and intellectual. We both have proper intellect. It's like why some people are so sure of their decisions and why some people are not. It's because it can be accidental also, like incidental also. Like some people have gone through few things and they are certain about things now. If you are going through something for the first time and your mana is confusing you, then you need to have just one thing to support you or to keep all the decisions in one order or in one line to benefit you. It's like your brain should function properly, and that will function with the proper deliverance of oxygen in it. It's like if there is a lack of oxygen going in your brain. अगर आपके brain में 60% से कम ऑक्सीजन जाता है जो आप ब्रीथ इन करते हैं और बाहर कार्बन छोड़ देते हैं, अगर 60% उसका नहीं जाए आपके ब्रेन को, तो you will have problems in decision making, you will have stress, you will feel depression without any reason. आपको लगेगा PS4 पे खेलते खेलते भी मजा नहीं आ रहा है. It's like that. It's like that because you don't have proper oxygen in your brain, so you are not actually experiencing the activity. You are just doing it because we are used to it, or we had a joy in our previous lifetime from it, but now we don't have, because it's something with the brain is not getting proper fuel to make you feel what exactly must be felt by this specific activity. So it's not anything, it's not situational, it's not by people. Nobody can make you feel doubtful, or even you cannot even make yourself feel doubtful. You will be so certain if your brain is functioning nicely. So try to do inversions without any effort. Try to just hang like a monkey sometime. Okay, like पैर ऊपर लटकाओ and just change your physiology. Let the blood go inside your brain and nourish the brain properly. Everybody have got this ability. If you are an IITian, I can make you sure that you have got a proper functioning brain. It's just the lack of oxygen inside the brain which is keeping you in doubts or making your decisions hard. That's it, nothing else. Once you have it, once you enhance your respiratory system, and once you circulate, once you just change the blood of the body, or you just change its you win the control over the pressure of the blood, then it's done. It's done. You can just do it anytime. You will be so certain about every decision, or you will be so accountable. As you mentioned, you will be so sure that I have to do this, and if I do this, I will be getting this. You will be so sure. Actually, we know it's hard for us to just go after one right decision because we have other option also. So this diversity of thinking, or this problem of just misleading ourselves on those options which are not required, is because our brain is too much attached to desires, also too much attached to the pleasure which we are getting in that another option. That's why we are not focusing on that one, which will take a sacrifice. But the brain will understand when it's functioning properly that if you do this sacrifice, the more pleasure will come, which is right now in another option. So brain tendency को, brain को ज़्यादा fuel दोगे तो क्या होगा, बहुत आगे तक की सोच पाएगा nicely for your benefit.
else it can just think for right now situation. वो ज्यादा hurdle नहीं ले सकता if you are not giving. आपकी कार 400 की स्पीड पे कैसे भागेगी जब आपको टर्बो बूस्टर ही नहीं है? नहीं? Yes, sir. It's like that. Okay. जी Okay. Thank you, सर sir. मेरा एक क्वेश्चन है, इफ आई may ask. जी कौन बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम निशा है, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है. सो वुमेन निशा nowadays जी। are facing problem in their lumbar region, जहाँ पे थोड़ा बल्ज हो जाता है. निशा और सतीश जी। yes sir, we ओके all- जी We would request those who are asking questions to please switch on their videos. जी निशा जी नमस्ते बताएं। तो लंबर रीजन में डिस्क बल्ज हो जाता है, वो जो काफी कॉमन प्रॉब्लम है. मेरे खुद के फैमिली में एटलीस्ट 3 वुमेन हैव दैट प्रॉब्लम. इसके ऊपर से विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, और डॉक्टर का सॉल्यूशन है टू टेक स्टेरॉइड इंजेक्टेड डायरेक्टली टू द स्पाइनल कॉर्ड. और ओके बोलते भी है आगे बिल्कुल बेंड होना ही नहीं है, बट कुछ लोग बोलते हैं योगा करने से ठीक भी हो जाएगा. आई हैव बीन ट्राइंग सूर्य नमस्कार फॉर पास्ट 4 months इसके लिए, बट इतना हेल्प नहीं हुआ है. मैंने देखा आपने जो आसनास दिखाया, कुछ और आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं? बोलना क्या चाहते हैं? इट्स लाइक सर आई मीन जो सूर्य नमस्कार let me tell you Nisha ji, let me tell you, it's not the Surya Namaskara which is not helping you, or it's not the yoga which is not helping you. If I would mention about, if I would make you more sure, or let me put more weightage on what I'm going to say, that 7 years back, I don't carry, I have a certificate of disability. And it's like around 37, 42 disabled. And it was including scoliosis, and it's like mild cervical problems also. But I was having scoliosis in my lumbar and in my thoracic region. And doctors gave me a certificate. That's a certainty a doctor can give. I am a physician by myself also now. And I was too much, relied on my doctor. They said that you don't have to move. So I was in a wheelchair for so long, such a long time, for 7 to 8 months. There was no way out of it. There was I have to live with this scoliosis for all of my life. And scoliosis is more worse than a slip disc or a disc bulge or a herniation or a tear. Okay. Let me tell you a super magnificent thing about our spine or about our disc. जितना प्रेशर से आकर हमारा डिस्क बाहर जाता है, या उसमें बल्ज क्रिएट होता है और हर्निएशन होता है. हर्निएशन और बल्ज इज व्हाट, इफ आई वुड एक्सप्लेन इट, एक सिंपल सा रबर के ऊपर आपने प्रेशर डाला और रबर प्रेशर की वजह से थोड़ा सा उसमें से एक बुलबुला जैसा बाहर निकल के आ गया. दैट्स अ बल्ज, दैट्स अ हर्निएशन. थोड़ा सा रबर एक्सपैंड हो गया और एक बाहर निकल के आ गया, एक छोटा सा पीस, उसमें आपको एक्सट्रीम पेन होना शुरू हो जाएगा. सो लेट मी टेल यू, उस बल्ज के लिए वहां पर स्पेस नहीं है. ओके. एंड इवन द डिस्क कैन नॉट टेक दैट मच प्रेशर. डिस्क इज नॉट मेड टू टेक दैट प्रेशर. अभी क्या है, वी डोंट गिव प्रॉपर एक्सटेंशंस टू दोस वर्टिब्रेस. We don't twist those vertebrae after giving proper extension. Like this is okay, these are 2 vertebrae and there is a disc in between. I am putting a pressure now. Because of the pressure, the bulge is outside. So what I have to do is simple thing. I have to extend these vertebrae and I have to twist them. Twist करने से क्या होता है, if you would go and ask a doctor, जितना pressure से disc बाहर जाता है, उसका उतना ही pressure से वापस आने का मन होता है, because उसका space ही वहां पर है. But it is never getting that space, or it is not getting that area to just get back. तो हमें योगा से क्या करना है? Mostly people execute Surya Namaskara in a very weird and a very wrong way. And there is a culture of executing yoga 108 times a day, which is utter stupidity. How would you feel if you would say Namaskara to your mother every day for 108 times? What is that? It's like it's not for a physical thing. People are taking it for physical. It will just take off all your physical problems, but it is not for physical. So we don't have to become stupid for practicing Surya Namaskara 12 times, 10 times. It's just for one time. If you have a specific disorder, or if you have a specific alignment issue with your this vertebral thing, then I told few asanas today itself also for the lower back. But we can just means like nowadays I'm trying to put stuff on YouTube. I don't want to become too much commercialized, so I don't go on YouTube. But I'm trying to just put few nice things so that people may not have this
issues about how yoga is not working for them for the diseases or problems like that, and what is this enlightenment thing, why people are doing so much of business on this. I'm trying to just work on this camera thing because I have camera consciousness problem also. So it's like, it's not a problem. It's not a problem at all. It's, you have to extend your spine and you have to just let that thing go inside, and bulge will require a proper time to recover, because once it is gone inside, like during practices, some chiropractor may shift it inside, but there is a certain change in your physiology, and because of that there is a pressure on the disc, that's why it is moved outside, or the herniation or the bulge is there. It cannot happen in one day that it will just go inside and it will get recovered, because रक्त मांस मज्जा इसका एक प्रोसीजर होता है. डिस्क जिस चीजों से बनती हैं, it comes after 42 days actually. तो 42 दिन तक वही similar practice, then it will get recovered by itself naturally. And if you are into the, like, if you are into age of with the high cell recovery, it may also recover in 30 days, but you have to just do that certain practice, yogic practice, for a certain period of time. It may not happen over one day. Like chiro practices or just momental practice are not like permanent solutions, they're temporary solutions. You have to just give time to your body. Also, you also have to check that if your body recovery rate is going well, because it may go in and you might also giving rest to it, because as you are saying, you have this problem from a long time. You have to, it's like, I can just tell you right now, I cannot correct it, that's a problem. लेकिन आप एक काम करें, जब भी आप कभी उत्तान आसन जैसा आसन करते हैं, एक तो फर्स्ट इज स्टॉप बेंडिंग, स्टॉप डूइंग बैक बेंड्स. आपको बैक बेंड्स नहीं करना है, बिल्कुल नहीं. आपको फॉरवर्ड बेंड्स करना है, एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉप योर स्पाइन. आपको फॉरवर्ड बेंड करना है विद सपोर्ट. टेक ए सपोर्ट इन फ्रंट ऑफ योर थाइस, ऐसा कोई ऐसा सपोर्ट लीजिए, एंड देन यू बेंड. आपको जिससे कि आगे बेंड होने के लिए प्रेशर नहीं करना पड़ रहा है, आपको बस शरीर ढीला छोड़ना है, एंड दैट रोप इज कीपिंग यू बैक. So your front body is falling forward and your spine will start extending slowly. Your fascia will become loose and they will start getting aligned, and then you have to do twistings, proper twistings. It may get corrected over a period of time. My iPad is 5%. I can take one more question, please. Sir, we will conclude session. Ji. Like who are participants, if you have any question, send in the feedback. Just we will let you know through the Acharya ji. Ji. I have one more. Okay, sir. 1 second, we will conclude the session. Okay. We are actually, as per what Acharya ji also had told us, we are out of time. So what I would say is what Shashi Bhushan suggested. We are going to seek feedback from you for this session. You can put your questions in there, and they will be conveyed to Acharya ji, and then he can maybe figure out how to answer them. Yes, sir. Okay. I think, hope you all found it useful, and if you want to really find it useful, then try to practice the sequences, and you can give feedback to us after. Okay. ठीक है नीरज जी, thank you for having me over to this intellectual platform of intellectual people. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yes. So in the end, I will just like to say that the sequences of asanas and the practice that we just saw in today's session seems very simple at the outset. There's some very simple motions that are needed to be done. But I think all of us will realize how much explanation Acharya ji had to give for that. To know that they are simple, you have to go through a lot of studying and contemplating and thinking on it. So all of us, many of us are not in a position or simply not capable of reaching that level of thinking, putting in that much effort and time. So we need teachers like Acharya ji to tell us what is simple so that we can do it. Thank you very much. And thanks to Acharya ji, and thanks to the audience for turning up on a Sunday, on a festival day, for listening, and also thanks to the Yoga Group for arranging. Thank you very much. Namaste. Thank you, Acharya ji. Ji. For taking the session. We'll close the meeting, Shashi Bhushan? Yes, sir. We'll. Oh, okay. Thank you all the participants for joining the session. Sir, I just would want to ask, are there any regular sessions which are going from Yogasta for yoga classes kind of thing?
Yes, there are. Shashi, can you please tell? Yes, ma'am. Actually, regular morning session is going on through online. Zoom link will be there. It will be every day 6:30 to 7:45. Where do I get that link? You can contact us through Sir, Yogastha. ma'am, you can write to the email, Yugasta's email. Yes. Yeah, if you write to yogastha@iitb.ac.in, they will get in touch with you and give you the link. Sure, sir. Thank you. Okay. Okay. Shashi, I think we can close the meeting. Yes, sir.